Hi guys, good evening. So today is 10th of March 2023 and 2023 I think this is the first vlog I'm shooting. It's a basic vlog. What is this? Yeah, so what I was saying, so होली के बाद ये पहला vlog है guys, as you can see. होली का कलर अभी ढंग से गया भी नहीं. Look at my hands, it's all red. Look at my nails guys, it's so funny. They just पता नहीं guys ये लोग कहाँ से कलर लेके उठा के लेके आया था. It was a horrible color and पूरा छूट ही नहीं रहा guys. Like मेरा रब करते करते मेरा हालत ख़राब हो गया, बट कलर ही नहीं छूट रहा है. I don't know why. I think they have some chemical in it. So उसके बाद मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए. Other than that, everything is going fine. Well, my work life is quite busy now. उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो शूट करने का. So today I woke up at super early, like 3:30. Yes, 3:30, and I took 4:20 का ट्रेन. एंड फिर मैं काम पे चली गई. सुबह 6:30 का कॉल टाइम था एंड इट वॉज सुपर टायरिंग डे, बट द शूट वॉज क्वाइट गुड. जल्दी ख़त्म हो गया. लाइक कितना बजे ख़त्म हुआ? 12 बजे का पहले ही शूट ख़त्म हो गया. एंड फिर मैं घर आ गई बहुत जल्दी, अराउंड 2 PM. एंड फिर उसके बाद मैं सो गई खाना पीना खा के. जस्ट वोक अप अभी. दैट्स व्हाई माय फेस इज़ लाइक सुपर पफी एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. आई हैव टू वॉश माय फेस विद सम गुड क्लेंजर. राइट नाउ आई एम यूजिंग सेटाफिल का क्लेंजर. एंड मैं अभी इसलिए बात करने आई गाइस बिकॉज आई हैव रिसीव्ड सम products from Amazon which I'm gonna set up. I have ordered that shelf kind of thing na guys, so that I will you know what do you call, like that I will organize. And also अभी मैं अपना पौधों में पानी देने आई हूँ guys, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 2 दिन बाद रेगुलर ड्यूटी है ऑलमोस्ट पौधों में पानी देना. मैं हर 2 दिन में एक बार पानी देती हूँ पौधों में. सो या लेट्स डू इट. अभी ये फूल हुआ था सुबह बट अभी नहीं हुआ है. दिस इज आई थिंक हिबिस्कस एंड दिस वाइट टोको, दिस इज बेसिल तुलसी. ये देखो ये वाला फूल का मैं बारे में बात करी थी. दिस इज तो यू नो पीटूनिया आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. आई लव दिस फ्लावर. उसके बाद में अभी गाइस पौधों में उन लोग का खाना दे रही हूँ, जिसकी वजह से दे आर ग्रोइंग फास्ट एंड दे आर बिहेविंग गुड एक्चुअली. जस्ट लुक एट दिस फ्लावर, इट्स जस्ट सो गुड यू नो. काफ़ी बड़ा हुआ है यूजुअल से एंड काफ़ी अच्छा हुआ. बट ये वाला पौधा ना, ये वाला पौधों में अभी फूल नहीं आ रहा. पता नहीं क्यों आ रहा है. इसका तो यही सीज़न है फूल आने का, बट बाकी सब में आ रहा है. मेरा गुलाब का पौधा जो है, ये मिनी गुलाब का पौधा है, ये अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. सी नया नया पत्ते आए हैं. कुछ दिन पहले बहुत अच्छा फ्लावर्स दे रहे थे, तो अभी शायद उनका न्यू ग्रो होने का टाइम आ गया है. सो अच्छा. लुक एट दिस कलर, इट्स सो वाइब्रेंट एंड प्रिटी. सी खुद से पौधे उगाओ एंड कुछ भी फूल हो, दिखने में कितना सुंदर लगता है ना. सी आई लव इट. I love them. This is my happy place guys. I just sit here and do my stuff and I'm so happy. I bought some really cool stuff from Mela. So I bought this cute little jholi, cute little bucket, and I bought this scrunchies in rupees I think 30. It's not that stretchable guys. I just bought it because I just want to wear this on my hand. And I bought this cute little metal hair clip which is so cute. Like I can put some little hair and it's just so cute. And I also bought this butterfly clip, just rupees 30. Just imagine guys. And also the cutest thing is this necklace which I bought rupees 100. Like it has some really cute flower in it, and then one evil eye. I really find it attractive. Like see this evil eye and this cute little, you know, this thing, flower thing is happening, and this thing, it's super cute. So I'm gonna wear this.
मे बी मैंने वीडियो के लिए लिया है, because I'm gonna wear this in my video, some of my videos. And I also bought this clutcher right here, which is again ₹30. It's quite sturdy and stretchable, guys. It has like a white and this like olive green type of color, I think. Yeah, olive green color, and it's so cute. And look at my holy hair color, guys. It all went burgundy. And yeah, so I was thinking of cutting my hair, so maybe the day after tomorrow I will cut my hair like thoda sa like layer type of मैं दे दूँगी, because I'm really bored of my hair right now. So I also have some of the really cool thing. Let me just show it to you guys. So here is the stationery thing that I bought for my eye makeup or for maybe hair makeup. So it is silver thing, and the stone basic, and the pearl, and then also I have bought this thing, of course, you know, and then again this golden pearl one. It's so cute. And also I have bought some loose pearls to, you know, stick this to the hair. आजकल जो hair style में देते हैं, so that's why it is super cool. And I bought this like कितना में, एक पैकेट का they have costed me I think 25 rupees if I'm not wrong, 20 or 25 rupees. It is so cheap. So you just have to put this on your kaata and then you are just good to go. And then I have just bought this ribbons for the, you know, the school, some braiding situation, some cool braiding situation. And also I have got this sheet, so it has golden and it has silver sheet, so you can cut the sheet from here, so you'll get like a stone sheet, okay. So you can place this on your hair or maybe onto your neckline, just to experiment some extra thing, and that's why it is there. And also I bought this cute little color, some cute stationery thing is happening. I really love this. Oh my god, I really love this color. It's Rani pink color. This is, the color is fall, I think. So there is a name in it. There is, I think, number maybe. Yes, this is purple. And also I have bought this Mata ka Tyra or Myra, whatever it is called. I really like this, you know. And I also bought this one. The other one I have bought this 3 type का. एक मैंने already use कर लिया अपने स्लाइड के ऊपर, so I have left it too. There is some space right there, है ना, उसको मुझे कवर करना है, बेड को थोड़ा उसको उधर घिसका के. And there is some space here and there is some space there also. तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अलमारी को इधर घिसका देना है एंड थोड़ा सा इसको एंड साइड टेबल को थोड़ा सा इधर घिसका देना है. सो आई हैव द स्पेस फॉर माई rack wala thing. So I have this rack for, you know, putting some of my makeup and some of my essential stuff on a regular basis, so that I have to do. And so let's do. I also have bought my iska products, क्या बोलता है, giveaway का products, and which I haven't, you know, give it away abhi bhi, because I have to pack my stuff and I couldn't find boxes like this. So I'm ordering from online and I'm collecting the boxes for you, because I can't just have these boxes इधर इतना आसानी से मिलता नहीं है सब boxes. So yeah, so what I have got for you guys, let me show it to you one by one. What I have for you guys, one Elite Pin का lipstick. कोई भी शेड हो सकता है, doesn't have to be the same shade. हम 4 जून को ये गिव अवे देने वाले हैं. And this one, this is Swiss Beauty का foundation, mousse type of foundation. And then Dermadog का sun protection gel cream. And then Faces Canada का nude nail polish. ये वाला nail polish सबको मिलने वाला है same shade का. And my OG best eyeliner. This is the best eyeliner I have. And this one, the Dermadog का, you know, sheet marks. And then NY का my OG kajal. This is my favorite, all-time favorite kajal. So these all the gifts that I am going to giving away.
ईच वन ऑफ यू ओके, एक एक जन को ये सारा गिफ्ट मिलने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गिव दिस अवे. आई जस्ट कांट मूव एनी ऑफ द थिंग, so I have to just wait for my husband to come and he will fix the thing for me, and till then I'll just organize the stuff because I'm so craving to organize that stuff. Other than that, I'm saying the thing that I have ordered, it's a organizer door wala thing. It has come. Okay, let me just quickly nikalti hu. दिस इज़ माई ऑर्गेनाइज़र बेसिकली. सो आई जस्ट ऐसे करूँगी, मैं इसमें कपड़ा रखने वाली हूँ मैं, एंड बहुत सारा चीज़ें लाइक मेकअप का स्टाफ, माई हेयर एक्सेसरीज, माई हेयर का स्टाफ. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, सो गुड, सो गुड इन क्वालिटी राइट हियर. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर वार्डरोब को थोड़ा सा और उधर करना पड़ेगा, बाकी सारा सामान को थोड़ा सा और उधर करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा. But the only problem is I can't do it by myself, guys, because it's so freaking heavy. So I have to just wait for my husband to come and yeah. मेरा गोपाल का जगह है. My Gopu is having his dinner and I put this light, star light, and so have some tea because I'm craving for tea and I can't do without my tea. My body can't function without my tea, so let's just make some tea and then move on to the dinner. Like dinner में क्या बनाना है. So today I was thinking of making this light. The heck. So today I was thinking of making egg chili and some roti. Roti, actually I can't make roti. There is lots of rice remaining, so I'm gonna make some fried rice with the leftover rice and then some egg chili, and then yeah, just good to go. Just guys, that we need for our egg chili 2 onions and some leftover cut हुआ onion, धनिया पत्ता, green chili and 1 capsicum, and how many eggs you want, just hard boil them. Let's just cut this together and yeah. So my recipe is almost ready. Just sprinkle some dhania patta on top and my recipe will be ready. Yeah. Smile, full smile. Smile, big smile. Big smile. Naughty smile. Hi guys, good morning. So today is 13th of March and मैं काफ़ी सुबह उठी like 7 AM and then फिर घर का काम वगैरह करके and अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ. So today I'm making pancake and मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का पार्ट जोड़ के एक ब्लॉग बना रही हूँ. I hope you guys enjoy and other than that आज मेरा काफ़ी सारा काम है. So I make a to do list, make sure. So मैं होते जाएगा, एक एक करके टिक करते जाऊँगी, अदरवाइज I ended up doing nothing. आज मेरा वीडियो शूटिंग का भी डे है and other than that what I have to do, I have to make some tea for myself after I'm done with my pancakes. This is what my pancakes looks like. It's a baby pink kind of thing. मैंने थोड़ा बहुत फूड कलर ऐड कर लिया क्योंकि it's looking super white and I'm not liking it. ये रहा तवा, some butter and that's it. right now and I have my mint का पौधा यहाँ छोटा सा टब में and I was really thinking of making some mint water because ठंडा के टाइम में I take my mint water and थोड़ा सा vlog पे interesting हो जाएगा, you know. But I don't take it on a regular basis, but sometimes I do. So this is my fresh mint का पौधा and ये एक फूल का गाछ है. तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर से ले लूँगी, लाइक 1-2
thanks, like this much is enough for me. Yeah. And also guys, ये देखो पपीता का पौधा मैंने लगाया है, मैंने नहीं, मेरे साथ में मैंने लगाया है. And if you are wondering कि what पौधा is this is a passion fruit का पौधा and I'm really excited to have my own passion fruit. So इसीलिए मैंने लगाया है and it's so cute and cool. And some what do you call it, hibiscus, yes. And I'm super excited to have my mint water. Hi guys, so I'm done with my, like I'm ready almost to do my video, but before that I'm gonna show you something. So this is the exfoliating kind of gloves, if I'm not wrong, but I'm gonna use this to wash my dishes and do my household work because my nails काफ़ी टूट रहे guys because of that. And other than that, इसका जो surface है बहुत ही ज़्यादा soft है, so मैं इसको as a exfoliator भी use करने वाली हूँ. और कुछ नहीं, let's make our to-do list first and then I'll show you a really about last day. मैंने इसको बना लिया एंड सबसे ऊपर वाला पोर्शन में मेरा गिव अवे का सामान सब है. These are the giveaway things that I'm gonna send it to you guys. उसके लिए मुझे आज ही काम करना है. एंड देन द अदर बॉक्स, इसमें थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है गाइस. मैंने इसको लाइक कल ही बिखार के रख दिया क्योंकि बस बिखरा हुआ पड़ा है. बाकी सामान मेरा मेकअप का बैग में है. एंड ये वाला पोर्शन गाइस इज माय फेवरेट. सो वी हैव रियली कूल स्टफ लाइक ऑल आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान. And also guys, I bought this cute little stars and rhinestone from Amazon, this one and the colorful one. I mean, I just loved it. So maybe I'm gonna play with this two things today. And they have give also this tweezer along with that and some white pencil. I don't know इसको कैसे यूज़ करना है, but yeah. Other than that, इसमें थोड़े बहुत bags पड़े हुए हैं which I need to clean. इसमें some random stuff. I've been drinking. Over excited.